ऐसे ऑफलाइन शुरू हो गया 6th सेमेस्टर 10 o'clock ओके हाँ so another 5 to 6 classes possibly from today onwards I'll teach somehow from the slides but the same writing but on the top of the slides rather than directly writing. If you feel bad, then I'll convert. I hope. Yes, come in. Topic? Marks? ऑफलाइन जो अभी 4 मार्क दिया हूँ 5 मार्क अभी दूंगा वो कैसे मिल रहा है वो उनको मिल रहा है ऑनलाइन को नहीं मिल रहा है क्या चीज सर नहीं नहीं कुछ नहीं okay so last class we discussed about the page replacement algorithm. The page replacement algorithm usually happening in case of demand paging. If there is a demand paging, then only the page replacement algorithm comes into picture. And the last one we have studied the additional reference bit algorithm. So today's class will go for quickly the second chance. The second chance algorithm is basically followed a queue kind of things. If you can think about it is a circular queue. And if I can represent this circular queue in this manner, so let's assume that these are the frames. This is frame number 0, frame number 1, frame number 2, frame number 3, and frame number 4. Assume that you have 5 frames. Are you getting my point? Previously you are drawing like this. If it is become my RAM, the RAM has 5 frames. Here I feel like it is a circular. Yes, please come in. Yes. You feel like it is a circular, and inside each frame there are 2 provisions will be there, either what is the reference bit and what is the page number. Are you getting my point? What is the reference and page number? What is the reference and page number? Again reference and page number, and a reference and page number. Since my all LRU approximation algorithm is based on the reference bit, initially the reference bit for each frame will be become 0, means nothing is currently present inside this frames. Are you getting? Yes, initially 0. What is the page number? Since no page is present, page number is garbage for us. Suppose a 5th page has come, then 9th is come, then 2 has come, then again 5 page request has come, then 3 has come. Like this the page numbers are coming. You know, in case of page replacement algorithm, the different pages are requested by the CPU and that page has to be searched. Can this 5 is present here? No. And before doing this, there is also a reference pointer. So there is a pointer pointing to a particular frame. So currently it is pointing to which frame? 0th frame. Then 5 has come. Is there any 5 present in any of the frame? No. And can your pointer pointing to the frame where the R is 0? R is 0. It is pointing to a frame where R becomes 0. Since R becomes 0, what it does? He change it to 1 and place it is 5. समझ में आ गया? R 0 था मतलब कोई इसको रेफरेंस अभी तक नहीं किया है, वो completely 0 है, and page was not there initially. That's why 5 is coming. Nowhere 5 page present. That's why I kept this 5 there. Change the reference bit to 1. Means currently it is used. Assume that it is used. Once it is used, now your pointer goes to the next one. Like this, the pointer moving in a clockwise direction. Okay. So 9 is coming. So hopefully you can know the page will be 9. Pointer moves to this place. 2 is coming. Definitely P will be 2 and the reference changes to 1. Then 5 once again coming. So, sorry, after 2 will become where the pointer is. The pointer is here. Then again 5 is referred. Since 5 is referred, already it is 1. So no need to do anything. Yes, correct, no? R is become 1 and already it is 1. So no need to change anything. But your pointer is still there. Pointer has not changed even if it is referred. Yes, currently. Then 3 is coming.
then what will happen? 3. Where the 3 will be? So P will be become 3 and R is changed to 1. Now the pointer comes to this place. Okay. Now next page is coming 6. Okay, 6 is coming. So where it will be placed? P will be 6. This is become 1. Now your reference bit pointing to whom? Tell me. The reference pointer pointing to whom? कहाँ पर अभी रखा? यहाँ पर? Here it has kept or not? Now your pointer pointing to this or not? So अभी क्या क्या फ्रेम है देखिए 5, 9, 2, 3, 6 and every frame is currently referred. Okay, let's assume that now the 2 frame has deleted. Okay, after this the 2 becomes deleted. If the 2 will be deleted, what is going to happen? Please help me. This is become erased and this is become 0. Okay, yes. Now another frame comes 7. कहाँ पे रहेगा? That is second chance says something. What the second chance says here? Since a pointer pointing to now 1, can your 7 present here? No. Means 7 has to be replaced somewhere because all the frames are packed and it has to be replaced somewhere. So how it is replaced? Where your pointer is? The pointer is pointing to here. But your reference is 1. Since the reference is 1, he will give you one more chance. और एक chance आपको देगा. अगर if the pointer is pointing to a frame whose reference bit is 1, then this algorithm will give one more chance. कैसे chance देगा? He change it to 0 and move the pointer to this place. Again check किया pointer is pointing to this frame but still R is 1. एक chance देगा. कितना chance दे रहा है? एक chance दे रहा है. Yes. So it is make it to 0. 9 यहाँ पर है. 9 अभी भी यहाँ पर है. Okay. So now it is pointing to whom? This. Now reference is 0. Since reference is 0, 0 मतलब replace करते हैं. So कहाँ भी replace होगा? 7 will be replaced here and this has to be changed to 1 or not. समझ में आया कि नहीं? अगर 0 मिला, he has put it there. अगर 1 मिला, एक chance उसको देगा. क्यों ऐसे chance मिला बोलिए? Because if another page is coming, let's assume that another page is coming and now it is becoming what? 9. क्या होगा? आंसर दीजिए. 9 already present है. If 9 is already present, now it is again changed to 1. वो बहुत चालाक आदमी है. क्यों बोल रहा हूं? अभी पॉइंटर हमारा कहां पर है? Since the pointer has 7 has kept it here, my pointer should be here. Yes or no? Another number comes as a 4. कहां पर रहेगा बोलिए? कहां पर रहेगा? Pointer is pointing here, but it is 1. इसको 0 बनाएगा. ठीक है ना? इसको 0 बनाएगा. फिर pointer moves to here. Again reference is 1. इसको भी 0 बनाएगा. Now pointer comes to this. Now क्या है? Now 9. So कितना बार उसको छोड़ दिया? एक बार उसको डिस्टर्बेंस के लिए छोड़ दिया. नेक्स्ट बार वो पकड़ गया कि नहीं? Yes. Then what he does? He has to be replaced with 4 and change it to what? 1. But अभी pointer कहाँ जाएगा? Pointer will pointing here. If another page comes 2 was not present, but इसको फिर से chance मिल गया. Because before this 2, it has changed to 0, but again it has referred. Since it has referred, again it will get a chance of not. So every time you refer, reference bit change to 1, and after that, one more chance you will give because 1 is changed to 0 and it will. Got it? This is basically a second chance algorithm. Another one is a simplest algorithm, counting algorithm. ये usually कभी नहीं आता है एग्जाम में, आज तक नहीं आया है this counting and this one. But sometimes if an interviewer will ask, you have to know that what is a interesting second chance algorithm. The counting algorithm. What the counting algorithm simply says that for every frame there is a counter. Yes. Now guess what should be the counter now? This. The moment a page gets referred, it is changed to 1. Once again referred, it is changed to 2. Like this. If a page is referred, the reference bit is now incrementing. It is not dwelling between 0 and 1, rather it is incrementing. Since it is incrementing, then what will happen? If a new page will come, which frame is going to be replaced with the new page? Least one. Whichever the counter has the less value, that will be replaced. समझ में आएगा? उतना ही. हाँ. क्या? हसिंग. आप बोल सकते हो क्योंकि
वो पेज कहां पर है ढूंढने के लिए आप हसिंग बोलता हूं. Where this frame is present, to identify this one, hashing can be used. But the rule says simply, instead of making my reference bit dwelling between 1 and 0, now it is increment the reference bit. First time referred 1, second time referred 2, third time referred 3. So among this all the frame which is going to be replaced, the page which has a less reference value, that is going to be replaced. So that is the counting algorithm. But what is the purpose of all this algorithm? LRE. Because of the memory size is very less. Because of the less memory, demand is coming. During the demand, that page is not available. That's why the page replacement algorithm is available. Means now we can say the demand paging somehow leads to increase the multi-programming. Is it correct? Is it correct or wrong? Can your demand paging increasing the multi-programming? Because of page replacement algorithm, instead of running only 1 or 2 programs, you can able to run n number of programs at a time or not. जब भी चाहिए, my page replacement algorithm says that you remove one page and bring it. Means your demand paging allow multiple programs has to be run at a time. Means the degree of multi-programming. You can say the increasing the degree of multi-programming. What is the degree of multi-programming? As the number of programs at a time run will be high, the degree will be increasing. Means you can say, if you draw a figure like this with x-axis as the degree of multi-programming, and this is a CPU utilization. Can anybody tell me whether the degree of multi-programming increasing, then CPU utilization increase or it will be reduced? Increase? Yeah. Why? Linear. Why? Will not be idle. Why? Linear. हाँ? क्यों multi-programming increase होगा तो CPU utilization increase होगा? क्योंकि तब ज्यादा प्रोसेस CPU प्रोसेस करेगा. CPU ज्यादा प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पाएगा. एक होने से क्या नहीं कर पाएगा? मतलब एक होने से भी तो फुल टाइम एग्जीक्यूट करेगा. तो मतलब आइडियल टाइम कम होगा. सर एक का जब इंटरप्ट होगा दूसरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा. एक का जब इंटरप्ट होगा, इंटरप्ट होने से इंटरप्ट एग्जीक्यूट होगा. मतलब आइडियल टाइम कम होगा. आइडियल मतलब क्या? आइडियल टाइम क्यों कम हो जाए? मेरा एक प्रोग्राम है, पूरा प्रोग्राम अभी मेमोरी में है एंड होल प्रोग्राम इज रनिंग, सो सीपीयू इज बिजी. हाँ, वेरी नाइस. When a program is currently executing, if he needs any input output and you have only one program, can your CPU will be busy at that time? सोच लीजिए ये मेरा प्रोग्राम है, यहाँ पर इतना एग्जीक्यूट किया CPU and this is my IO. After execution of this for IO, can your CPU is involved there? क्यों नहीं? कौन responsibility है? How without a CPU the IO can be executed? तो वो तो हार्डवेयर है. हाँ? तो रजिस्टर तो मेमोरी है. तो वो तो वेटिंग क्यू में जाता है. वेटिंग क्यू में जाता है. नहीं, आप मेरा आंसर सही तरह से आप अवॉइड कर रहे हो मेरा क्वेश्चन को. नहीं. There is a CPU execution, IO execution, again CPU execution, again IO execution, like this. I told that after the CPU executing this much IO requirement, suppose there is a equal to 1 as written, then after printf is written, then b plus plus is written, scanf is written. I am saying a equal to 1 will be done by whom? CPU. But printf has to be done something in the IO, and during the IO the CPU is not involved, I told. But you are saying it is involved. Not involved. What मैं बोल रहा हूँ involved होगा. कैसे? मतलब इनिशियलाइज करना होगा, कमांड देना होगा ना. कौन सा टेक्निक आपको सीपीयू को यूटिलाइजेशन करने के लिए मना कर देता है? वो DMA. That is a direct memory access. What the direct memory access says that the CPU will be told to the IO controller that you please take the data from the RAM. Then after CPU is busy with other work or not. Yes, because of this, during this IO, the CPU becomes ideal or not. But because of this multi-programming, when this becomes ideal, that time another program's CPU will be executed or not. So that's why the CPU utilization is better. Yes, then what happens?
as the number of programs increases inside the memory, my CPU utilization gets increased. But तो नीचे if आएगा it is ना now 10, now 1000, now it is become 10,000, can it will further increase or something is going to happen? सर कुछ तो पिक होगा ना, मतलब होगा? लिमिट होगा। सपोज सोच लीजिए मेरा प्रोग्राम में करीब 10 फ्रेम्स है, 10 फ्रेम्स है, कितना फ्रेम्स है टोटल? 10 फ्रेम। अभी ओनली देयर इज ओनली 2 programs are running. One program will be get maximum how many frames? 5। अरे 10 फ्रेम्स है, 2 प्रोग्राम अभी रन कर रहा है, हाउ मेनी मैक्सिमम फ्रेम्स वन कैन गेट? अगर प्रॉपरली हम इक्वली डिवाइड करते हैं 5। अभी 5 प्रोग्राम आ गया, 2 अभी 1000 प्रोग्राम आ गया, तब 10 ही कर सकते हैं। मैक्सिमम 10 का रहेगा, मैक्सिमम 10 का रहेगा, रेस्ट 990 whenever the demand, one has to be replaced and another has to be come or not. It will be happening like this. When the number of programs are increased a lot, then the number of replacement will be high or not? Yes, that is the point. The number of replacement will be more. Though if the number of replacement will be more, then the CPU is busy more work with replacing the pages rather than execution the pages. So that's why as the degree of multi-programming increases, CPU utilization increase. But as it is increased larger to larger, then gradually it is goes down. And that step onwards, the situation is called as a thrashing. Yes, the thrashing is a scenario where after increasing the multi-programming, instead of the CPU utilization has to be increased, rather the CPU utilization will be reduced. One can argue, sir, CPU utilization increase कर रहा है, हाँ increase कर रहा है, but actually throughput is not performing better. आप वो CPU क्यों बोला? नहीं CPU utilization increase कर रहा है, because the CPU is most of the time busy in replacing the pages rather than executing the instruction present inside the page. समझ में आ गया? अगर ज्यादा आदमी आ जाएंगे, लोग क्या बिजी रहेंगे, उनको कैसे केयर करेंगे, rather than कैसे काम करेंगे, वो काम नहीं आएगा. So with a less number of people, not very less होने पर क्या हो रहा था? CPU utilization कम हो रहा था. But that's why you are increasing the number of program. But as you increasing the program, up to certain extent it's okay. But if it is increased more, this cannot be performed. Like you can see in a normal machine, 5 VLC प्रोग्राम चलाइए, VLC प्लेयर चलाइए, आपका देखिए मशीन पूरा सही चलेगा. 50 कर दीजिए, देखिए वर्ड W टाइप करोगे, 1 मिनट के बाद आपका वर्ड में आएगा W, because your context switching is also involved there, and as well as your replacement is also involved there. So because of this, the thrashing occurs. So thrashing is a scenario where even if there is a degree of multi-programming is increasing, rather than increasing the CPU utilization, the CPU utilization starts reducing. That is the idea. Okay. So with this, we have somehow completed this memory management technique. Okay. Then we'll start with the new thing. Yes. Is there any solution for thrashing? You have to limit the number of multiple. Otherwise कुछ नहीं है. मैं बोलूंगा कि मैं हजार बढ़ा दूंगा, RAM को बढ़ाइए, it's okay. Either you increase the RAM or you have to reduce the number of multiple. आप अगर वो बढ़ गया और ये कम है, constant है, there is no issue. Okay. So we'll start with this. So I'll share something today's class if possible. I have these slides, few slides with me. So those things I'll share with you. This memory management slides. Whatever I taught, the same thing is written in a nice pictures only. Otherwise, the content will be less. We have read more, but there the content will be less. So we'll start with today's class. Sorry. We'll start with disk management.
So this is the thing. These things already it is there. I'll share so that it will help you. So from the very beginning, the way we have studied the memory management, it will helpful for revision purpose. What is the goal of the memory management? What is the basic functionality? How a program gets executed? ऐसे पढ़े कि नहीं? कैसे हम executable file prepare करेंगे? दो type का linking है. How it is happening here? Then there is a compile time, load time binding. Then what is a logical and physical address, limit register, base register. Then there is a monoprogramming, multi-programming. Then memory allocation with a multi-programming, contiguous and a non-contiguous. Here it is a fixed partitioning, variable partitioning. Then non-contiguous allocation में आप paging and segmentation हम लोग पढ़ेंगे. And in fixed partitioning, there will be internal fragmentation. What is happening? How the internal and external fragmentation comes into picture in variable partitioning. How the paging works. What is the frame, page, how it is working. What is the principle? ये सब मैं book से copy paste कर दिया हूँ. ये figure कौन draw करेगा? This is my own figure. So how exactly a paging works in a normal example kind of things. Then the numericals, that is what effective access time. Yes, this is effective access time. Then what are the page table has kept valid bit, reference bit. This, even if you have a page table, our memory access will be high. That's why you are going for the TLB. How the TLB works here. So there is a hit case and there is a miss case, and how the effective access time comes. Then issue related to the paging. Then you go for the multi-level paging. Multi-level paging हम थोड़ा ज़्यादा पढ़े, यहाँ पर कुछ नहीं है इतना. But this diagram indicates that how the multi-level paging works. Okay, and this is the issue because I draw this somehow. I hope you can understand by this. Then what is the inverted page table? It is working. The number of frames is equal to the number of entry, and each entry has a PID along with the page number. So that here we need something called as hashing. Yes. Then comes the segmentation. Normally we feel like these are the basic segments, and usually my segments are copied here. That's why the external fragmentation comes. Instead of keeping the segment at one place, we discuss how can you divide the segment into a number of things. So this is an example we have studied how each segment will be divided into number of parts and do like this. Okay. Then we studied virtual memory. So if page is not found, it will generate a trap to the OS. Then OS search for a page in the swap area or in the edit out, getting it, replace it here. After replacing, it has to be replaced here. So here there is a requirement of page replacement algorithm. So we studied first in, first out, optimal, and those things. These are the examples. So one studied Bell-ID's anomaly, then page replacement algorithm. This is our what? LRU approximation with additional reference bit we have studied. Then this is a this is second chance. So this is the reference frame which is gradually moving. As it is moving, you can see it here. It was 1 here. Then once a page is coming, it is changed to 0, changed to 0. Since it was 0, now it is replaced the new page with 1. Getting my point? So he is giving a chance to this frame and this frame. Okay. Then this is the thrashing. So as the degree of multi-programming increases, up to certain extent, the CPU utilization is high. But after that, it goes down. Okay. सर मतलब वो segmentation with paging वाला अभी use होता है ना? Use होता है. Yes. Actually, fine. So we'll go for this now. So please concentrate. Very interesting. Why I prefer, because कौन ये draw करेगा इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा prefer किया. ऐसे तो मेरा handwriting भी poor है. इसको draw करूँगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा. Yes. But last time I draw it somehow with this. Okay. So what is this disk management says? We have already studied a memory management which is mostly focused on the RAM. Now the disk management is focused on the hard disks. Since the hard disk is non-volatile, whereas the RAM is volatile, and inside the hard disk, mostly we are keeping the files. So while studying this disk management, we are also going to study how the file has to be stored, directory is going to be stored, how the copy, modified, move, all these things work by the help of the operating system. So before
learning those things, copy, paste, move, renaming, all this, or creating the file, or destroying the directory, creating the directory. First, you have to look into it, how the hard disk gets prepared. Yes, how it is going to be stored. If you can look into the hard disk is nothing but a collection of record players. Record player देखे ना, पुराना जमाना में जो एक record player होता है, एक इतना बड़ा होगा, वहां पर डाल देंगे, हेड को लाके यहाँ डाल देंगे, फिर वो घूमता रहेगा, फिर प्ले ऐसा ग्रामोफोन और समथिंग बोलता है, कूं कूं करके साउंड निकलेगा. Yes, so same thing here. If you can think, this is my whole hard disk. The hard disk is consist of this kind of disk, and each disk is called as a platter. Okay, एक एक डिस्क को बोलते हैं platter. इस platter का दो surface रहता है, one upper surface, one lower surface. If you consider here, it is a 3 disk present in a single hard disk, means there are 6 surfaces are present here. समझ में आ गया? And each surface look like this. Each platter का, so disk को क्या बोलते हैं? Platter. Platter का 2 surface रहता है. Each surface look like this. इस surface में आप देखोगे एक एक circle रहता है, and this circle is called as a track. Okay, so एक track है, एक track है, एक track है, and this track number 0th track, this is 1th track, this is 2th track, like this. And each track will be divided into number of sectors. ऐसे करके divide हो सकता है. Yes, and this part is considered as one sector, and this part will be considered as a one sector. Each one is become the sector, and here the sector is basically called as a block. And each block का normal size होता है 512 bytes. समझ में आ गया? Yes, क्या बोला मैं? There are number of disk is called as a platter. If there is a 3 platter, each platter has a 2 surface, means there are 6 surface. Each surface में number of tracks होता है, and each track divided into number of sector, and the sector is the unit area where the data is going to be stored. Yes, मतलब एक track में अगर 4 sector होता है तो कितना डाटा रहेगा बोलिए? कितना डाटा रहेगा? एक सेक्टर में कितना डाटा है? 512. मतलब आपका कितना चाहिए? 512 into 4 will be almost it is byte. Byte मतलब 2 KB. ऐसा ना? 512 into 2 is 2048. 2048 मतलब 2 KB डाटा रहेगा. सपोज सोच लीजिए एक फाइल आया आपका 123 बाइट्स. 123 बाइट्स. 123 बाइट्स बोल पाओगे कितना ब्लॉक में वो रहेगा? 2 blocks is sufficient or not? Yes or no? So one file, if the size of the file is 1023 bytes, then definitely it will be stored in 2 blocks. समझ में आ गया? ब्लॉक क्या होता है? Each block है एक सेक्टर. एक सेक्टर में अभी 512 बाइट का अगर रहेंगे तो कितना रह सकता है? अभी अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, there is how many surface are present here? 6 surface. कभी कभी क्या होता है हार्ड डिस्क में, since your plates are kept one after another, then if there is a 4 plates are present or 4 platters are present, in 4 platters there will make how many surface? 8. Yes, but instead of 8 they are keeping only 6 surface. Why there is a 6 surface? The top one and the ground one usually they are not using because of some hardware issues. क्योंकि upper surface कुछ को touch कर रहा होगा and lower surface also touching something. If I'll keep a head, sometimes this will be crash or something. That's the reason top one and the last platters below one they never use it, and middle ones top and below it is used. Means you can say they will use this and use below, use this, but they may not use the lower one and they may not use the top one. समझ में आ गया? Yes, in this basis it will done. And the middle one is called as a spindle. In this spindle the disc is moving like this. The disc is moving. Then what about this particular arm? The arm is this arm. This arm is fixed with the heads. ऐसे ऐसे 2 हेड होगा. सोच लीजिए
Yes, like this there are two heads will be there. As the arm will be moved, arm अगर ऐसे move होगा, अगर मेरा head ऐसा है, if arm will be moved, my heads are moving. Are you getting my point? So if the head should be moved, what will happen? If head is present in this particular track, अगर this head को थोड़ा इधर move कर देंगे, then it is pointing to a different track or not. So like this, आपका जो a platter होगा, यहाँ पे होगा head move करेगा, head move करेगा. If it is head is moving, gradually the head is pointing to which track that is moving. Then sector कैसे move होगा? How it is pointing to a particular sector? Assume that this is now pointing to which track? This particular track. कि नहीं? इस track को point out कर रहा है. अभी लेकिन कौन सा sector को point किया है? इस वाला sector को. How it is pointing to this one? This sector. Since the disk is moving, as the disk will be rotate, definitely this head will be pointing to this. But your head will never move. The head is pointing to one track. As the disk is moving, the sector is pointed by this head is changing. What is my point? Yes, in this idea it is there. That's why it is saying the sector is the basic unit of the data storage, and each sector will be called as a block, and each block has a 512 bytes. इतना तक आप समझ गए? Yes. But please remember here one interesting things. So if I say there are 6 surface, याद रखिए, there are 6 surface. Yes, each surface has 4 tracks. One track has 8 sectors. क्या बोला? There are 6 surface, then each surface has 4 tracks, and one track has 8 sector. Can you tell me what is the hard disk size? 8 into 512 into 4 into 6. ये नॉर्मल कैलकुलेशन, इसको मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता हूँ. आप थोड़ा सोच लीजिए. कितना बोला है? कितना सरफेस है? सर 4 into 4 into 6 सरफेस है. 6 सरफेस. ईच सरफेस में कितना ट्रैक्स है? 4 ट्रैक्स है. ईच ट्रैक में कितना सेक्टर है? 8 सेक्टर है. एंड व्हाट इज द टोटल साइज ऑफ द हार्ड डिस्क? सर 96 KB. 96 KB. He's saying 96 KB. Is it correct? कैलकुलेट कीजिए, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन. हाँ देखते हैं. ओके, एक सरफेस का पहले कैलकुलेट कर देते हैं. कितना 64 KB है. यस, कितना आता है पहले देख लेते हैं. एक सरफेस का, एक सरफेस में कितना है? 4 ट्रैक. एक ट्रैक में कितना है? 8 सेक्टर. सो टोटल एक सरफेस में कितना सेक्टर होगा? 4 into 8 32 की नहीं? समझ में आया कि नहीं? अरे ऐसे ऐसे करके कितना ऐसे है? 4. एंड ईच में कितना है? 8 into 4 कितना हुआ? 32. एंड 32 क्या हुआ? सेक्टर. ईच सेक्टर का साइज कितना है? 512 बाइट्स. 16 KB है. इंटू 512 1 KB, मतलब ड्रो ट्रैक 1 KB है. 32 सॉरी 2 सेक्टर 1 KB है. 32 सेक्टर कितना होगा? 16 KB होगा कि नहीं? सो 16 KB एक सरफेस हुआ. कितना ऐसा सरफेस है? 6 सरफेस है. तो 4 होगा ना, वो टॉप और बॉटम तो कम नहीं करेगा. अभी नहीं लेंगे ना हम लोग. नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि 6 सरफेस है डायरेक्ट. ओह अच्छा, 6 सरफेस है तो 6 into 16 comes as this of. Oh, very nice, very nice. I actually I'm going to tell in the next slide. So okay, you asked. His question is that since this is a sector, एक सेक्टर है कि नहीं? ये भी तो एक सेक्टर है, ये भी तो एक सेक्टर है, ये भी तो एक सेक्टर है. आप बोलोगे कि आप बोले यहाँ पर 512, यहाँ पर भी कैसे 512 रहेगा? नहीं रहेगा. The surface area of this is quite less than the surface area of this one. यहाँ पर जितना surface area है, यहाँ पर थोड़ा कम है कि नहीं? यहाँ पर भी तो कम है. How you can say that this is also 512, this is also 512? What they're saying, the density in this area is quite less as compared to the density in this area. So that's why it is maintaining like this. मतलब यहाँ पर डाटा जिस डेंसिटी में है, यहाँ पर डाटा कम डेंसिटी में है. So if it is a less density, then less data will be kept.
If it is a more density, then more data will be kept. So how they are maintaining in each sector, even if the surface area will be vary, but they are maintaining a same size. समझ में आ गया? Yes. So now you can calculate what is the hard disk size. अभी बोल पाओगे total number of sectors कितना है? Sectors. इस एग्जाम्पल में 6 into 4 into 8. सेक्टर्स कितना होगा? बोल पाओगे? 6.8 वो होगा. ट्रैक्स कितना है? ट्रैक्स 4. एक सरफेस में 4. 24. नो 4 है. एक ट्रैक में कितना सेक्टर है? 8. सो कितना सेक्टर हो गया इस सरफेस में? 32. सो कितना ऐसा सरफेस है? 6. सो 32 into 6, that number of what? Sectors of समझ में आ गया? Sir, I have a doubt that sir, this entire like pizza slice like intersection is called a sector. And एक सेक्टर है. And full well, at the I mean till 0 1 2 the full part is sector or the small bits are sector. No, this is one sector. Okay. And again that yellow part is another sector. This is yellow part is another sector. The sector. Okay. And each sector is also called as block. Okay. Each sector will be considered as sector. Okay. ये सबको समझ में आया? नहीं तो न्यूमेरिकल करने पाओगे. नेक्स्ट इमीडिएटली न्यूमेरिकल, 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल आ गया. ट्रैक कितना है? सेक्टर कितना है? एवरीथिंग इज रेडी. नाउ व्हाट इज ए सिलेंडर? यस, हाँ बोल दीजिए दीपंकर. सर इसका नाम ब्लॉक क्यों रखा है? फिर सिंपली सेक्टर भी बोल सकते थे. हाँ सही है, बिकॉज एक्चुअली बाद में पढ़ोगे even if the block size is 512 bytes, but when your CPU is going to be read, the block may be more than 512. वो थोड़ा नेक्स्ट क्लास को बताऊंगा. अभी के लिए आप याद रखिएगी सेक्टर इज इक्वल टू ब्लॉक यूनिट. यस, अभी के लिए आपका क्वेश्चन, वो उनका क्वेश्चन है अगर इसका नाम सेक्टर है इसको सेक्टर भी बोल सकते हैं, इसको वन ब्लॉक बोलने का क्या जरूरी है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेलिंग दैट इट इज अ वन ब्लॉक? देयर इज अ टू रीजंस एक्चुअली. यस, बाद में बोलूंगा. टू रीजंस अभी बोल देता हूं, नहीं तो आपका क्यूरियोसिटी होगा. व्हेन from a device you are reading the data, suppose from the keyboard you are reading the data, you are reading at a time multiple data और one bit आप read कर रहे हो जब कीबोर्ड से टाइप कर रहे हो. So when you type on the keyboard, then it will be your CPU is reading bit by bit. So these are called as a bit oriented devices. But in a hard disk, it will not read a single bit by bit. Rather whole block को at a time read करेगा. जब आप when you are keeping the head in front of the sector, then the whole sector data at a time read. Not like that one bit करके read करेगा. Since it is considered as a one block, that's why it is called a block devices. Block devices मतलब क्या है? Directly from these devices, it is going to be read the data block wise rather than is a character wise. So character devices and block devices. The block devices directly read a whole block at a time. In character devices, one character or bit wise it is going to be read. So in that case also it is being distinguished. Okay. Then what is a cylinder? What the cylinder is saying? Now cylinder will be easily understood by this case. Now how many tracks are present here? बोलिए क्या कितना ट्रैक है? ट्रैक देखिए ना, 1 2 3 4 ट्रैक्स है. सो यहां पर एक एग्जांपल करते हैं. कितना ट्रैक्स है? टोटल प्लैटर कितना है? प्लैटर कितना है? 4. सरफेस 8. जानबूझ के 6 बना दिया सो दैट यू कैन कंसंट्रेट. 6 ऊपर सरफेस, नीचे सरफेस को मिटा दिया. सो टोटल है आपका 6 सरफेस. ओके. देन कितना ट्रैक्स है? 4 ट्रैक्स देखिए ईच में 1 2 3 4 है. 4 ट्रैक्स फॉर ईच सरफेस. हाँ, ईच सरफेस 4 ट्रैक्स फॉर ईच सरफेस. देन बोलिए this will be 4 tracks. One track having how many sector? 4 or 8. जानबूझ के बोलो
8 सेक्टर, यहाँ पर नहीं डिस्टिंग्विश किया गया, मैं बोल रहा हूं कि 8 सेक्टर। यस, देन व्हाट इज ए सिलेंडर? ही इज सेइंग द सिलेंडर is the same track number in each surface. The collection of a same track number in each surface is considered as a one cylinder. So इसका ट्रैक नंबर क्या है बोलिए? 0 ट्रैक, 1 ट्रैक, 2 ट्रैक, 3 ट्रैक. So each surface का 0, 1, 2, 3 4 ट्रैक्स होगा कि नहीं? So इस सरफेस का 0 ट्रैक, 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 combine all the 0 tracks of all surfaces will be considered as a one cylinder. So कितना सिलेंडर होगा? 4 की नहीं? समझ में आ गया? यस, मतलब आप देख रहे हो कि ए पूरा एक सिलेंडर जैसा दिख रहा है कि नहीं? ए रेड वाला एक सिलेंडर दिख रहा है, ये ब्लू वाला एक सिलेंडर दिख रहा है कि नहीं? So each will be considered as a cylinder. समझ में आ गया अभी सिलेंडर क्या है? Then what is the purpose of learning a cylinder? ट्रैक तो सीखे, सेक्टर सीखे, हार्ड डिस्क साइज सीख लिए, सब कुछ सीख लिए, फिर एक चीज सीखेंगे. यस, सो अभी कितना टोटल ट्रैक से सिलेंडर कितना है? 4. सेक्टर कितना है? तुरंत सेक्टर कितना है? 8. बोलो टोटल कितना है? 8 into 4 into 6 into 4. आपका ट्रैक 4 into 8 कितना हुआ? 32. कितना सरफेस है? 6. कितना हुआ? 30 कितना था? 192. 192 क्या है? Into 4. Yes, 192 sectors. But what is the use? Now in these sectors the file gets stored. As I told, if a file size will be 1023, कितना sector occupy करेगा? 2 sector. Now the question comes, where this sector will be occupied, and when I am reading a file, how those sector will be fetched from this? Okay. So as per the CPU is concerned, the CPU fills this all 192 sector as a single array. समझ पा रहे हो? Very interesting now. वो क्या सोच रहा है? My sectors are present in each surface. But now what the CPU thinks? The CPU thinks that my sectors are represented as an array. Then कितना sectors है? 0 to 191. Suppose my a.txt file is present in this 129th sector and 141 sector. क्या किया है? 129 and 141. कितना साइज उसका है? 1023 बाइट्स है. सो कितना इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इसमें होगा? 1 बाइट, क्योंकि इसको मिला के कितना 1024, बट 1023 स्टोर हुआ है. 1 बाइट का इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है कि नहीं? नाउ व्हाट द सीपीयू वांट्स? द सीपीयू वांट्स टू रीड द फाइल. आप कैसे रीड करते हो? यूजुअली आप रीड करते हो क्या है? एफ ओपन a.txt करके R मोड में करते हो कि नहीं? Then it is a file, then star of f is equal to this. So when you make a read f or read this f करते हो, then what the CPU has to be read? The CPU first read 1029, then the CPU has to be read 141 or not. Then what the C? The CPU now wants to read this 129. But can this 129 is known to the hard disk? Not. This 129 is not known to the hard disk. What the hard disk knows? The hard disk knows that in some surfaces, some tracks, some sector, this 192 is present. Am I correct or not? Are you getting my point? CPU को क्या पता है? CPU सोचता है कि all tracks are in my one array. उसको कौन सा array का एलिमेंट चाहिए? 129th track and 141st track. So since we know this particular these 2 tracks, then CPU generates a what? Logical address. But this logical address has to be converted to a physical address. As per the hard disk, what is the physical address?
कौन सा नंबर सरफेस का, कौन सा नंबर ट्रैक का, कौन सा नंबर सेक्टर में 29 है कि नहीं, वो है आपका फिजिकल एड्रेस की नहीं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड दिस इज कॉल्ड एज ए ब्लॉक एड्रेस. But when it is comes to a physical address, that physical address will be represented in a different manner. What is that? C, H, and S. The C stands for which cylinder, which head, and which sector. तो 129 को किसमें वो डिवाइड करेगा? कौन सा सिलेंडर, कौन सा हेड, कौन सा सेक्टर में. Sir, it should be track, na? नो, जानबूझ के बोल रहा हूं. Oh, cylinder तो represents the track. नहीं बोल, कौन सा सिलेंडर मुझे पता नहीं है, वो बोलता है थ्योरी बोलता है, मैं आपको थ्योरी बता रहा हूं, मुझे पता नहीं है. सोचिए सीपीयू जनरेट किया है क्या, 129 ब्लॉक उसका चाहिए. दिस इज कॉल्ड एज ए ब्लॉक एड्रेस. दैट इज माय लॉजिकल एड्रेस. दिस लॉजिकल एड्रेस विल बी नोन टू होम, द हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क का किसका? देयर इज ए हार्ड डिस्क कंट्रोलर. This hard disk controller's work is to take the logical address, convert it to what? Which cylinder, which head, which sector this 129 is. समझ में आ गया? Then somebody asked me from the online, then cylinder क्यों बोले, आप तो track बोलना चाहिए था. Actually, cylinder is related to track. What is the head and what is the sector here? What he says, when my first cylinder is what? This is my 0th cylinder. This is my 1th cylinder. This is my 2th cylinder. This is my 3th cylinder. कैसे वो 191 or 192 blocks how it is represented? Please remember. सरफेस कौन सा है? इसका लोअर वाला फर्स्ट सरफेस होगा, इसका सेकंड, इसका नीचे थर्ड, ए वाला 4, इसका नीचे 5 एंड ए वाला 6. समझ में आया कि नहीं? सिलेंडर कौन सा है? सिलेंडर है 0, 1, 2, 3. याद रखिए. आपका सरफेस कौन सा है? ये नीचे वाला होगा 1, इसका ऊपर वाला 2, इसका नीचे वाला 3, इसका वाला ऊपर वाला है 4, 5 एंड इसका नीचे वाला ऊपर वाला है 6. दिस इज, बट प्लीज रिमेंबर दिस सरफेस is indirectly called as a head. Why? If you can see this particular hard disk, how many surfaces are present as per the looking is concerned? 6. Then this head is called as a 0th head. This head is called as a 1th head. This head is called as a 2th head. This head is 3th. This head is 4th, and this head is 5th. समझ में आया? Means this head is indirectly pointing to what? One surface or not. आप जैसे 6 surface बोले, indirectly I can say that this is the head or not. Head 0 मतलब कौन सा surface है? Top 1. Head 1 मतलब उसका below. Head 2 like this or not. Similarly, if we can come to this example, our 0th head is this one. 1th head is this one. 2th head इसका below वाला. A3th, A4th, A5th. मतलब head will be starts from what? 0 onwards. Cylinder will be starts from 0 onwards. But please remember, the sector will be starts from 1 onwards. सेक्टर. हाँ, सेक्टर कहां से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है. सिलेंडर 0 से. Yes, ऐसे है. Then how this 0 to 192 gets stored? Very interesting. वो क्या बोलता है कि the 0 to 192 first store cylinder wise. Cylinder wise मतलब क्या है? ये जो पहला सिलेंडर का फर्स्ट हेड में कितना सेक्टर होगा? पहला सिलेंडर का मतलब 0th सिलेंडर का फर्स्ट हेड में कितना सेक्टर होगा? सोच के बोलिएगा. 8. 8. ये जो सिलेंडर है, इट इज रिप्रेजेंटिंग टू वन ट्रैक और नॉट. ए सिलेंडर इस ट्रैक को रिप्रेजेंट करता है, ए वाला सिलेंडर इस ट्रैक को, ए वाला सिलेंडर इस ट्रैक को. मींस दिस पर्टिकुलर सिलेंडर विल बी रिप्रेजेंट व्हिच ट्रैक? आउटर वन.
the zeroth track of which one? First surface. First surface means zeroth head. उसमें कितना ऐसे सेक्टर्स है? 8 सेक्टर. यस, मतलब 0 to 1 to 8 will be represented by this one. बोल पाओगे 9th वाला सेक्टर कहां से शुरू होता है? ये जो है ना, उसी सिलेंडर का जो सेकंड सरफेस होगा उसका होता है. देन 9 to कितना हुआ? 1 to 8 वो हुआ, 9 to 16 हो गया, फिर 17 to this कहां से शुरू होगा? This, then this, then this, then this, like this. समझ में आ गया? तो क्या करता है? If you can think about, this is a cylinder, this is one cylinder, 2 cylinder, 3 cylinder, 4, sorry, 1 cylinder, then 2 cylinder, then 3 cylinder, then 1 cylinder पहले पैक हो जाता है, then second cylinder will be packed, then third cylinder will be packed. Can you tell me इस सिलेंडर में, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में कितना सेक्टर होगा? सोच के बोलिएगा. ईच सेक्टर में 8 into वो होगा. 8 into 6. सिलेंडर का इस वाला सरफेस में कितना सेक्टर होता है? 8. 8 into 6. कितना सरफेस है? 6. 6 into 8 कितना हुआ? 48. अगर ऐसे कैलकुलेट करोगे, इसमें 48 नहीं. Battery. 1 minute. जीरो में आज दे दिया सर ने. ओके, सो कितना हुआ? देखिए, द टोटल कितना हुआ? इसमें 8, इसका ऊपर वाला में भी 8, इसका नीचे वाला में 8, इसका ऊपर वाला 8, नीचे वाला 8, तो टोटल कितना हो गया? 48. अगर इसमें 48, इसमें 48, इसमें 48, इसमें 48, आप बोल पाओगे कहां पर टोटल कितना हो गया? 48 प्लस 48 प्लस 48 प्लस 48, 4 हो गया तो 192 हो गया कि नहीं? समझ में आ गया? अभी बोल पाओगे कि मेरा 129 मतलब 0 से वो शुरू कर रहा है, इसलिए 129 बोल रहा है. 1 से शुरू करेंगे तो वो कौन सा नंबर वाला ब्लॉक है? 138th ब्लॉक. आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं? अरे 0 से शुरू करने पर लॉजिकल एड्रेस था 129, बट एक्चुअली वो कौन सा ब्लॉक है? 1 से अगर शुरू करेंगे 138 ब्लॉक है कि नहीं? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? हाँ, सुनो, सोच लीजिए कि एक मेरा आ रहे हैं, मैं बोलूंगा थर्ड इंडेक्स ए है कि नहीं? ए 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, ये थर्ड इंडेक्स है, बट एक्चुअली व्हिच एलिमेंट इट इज? 4th एलिमेंट की नहीं? वही बोल रहा हूं. अगर सीपीयू बोल रहा है कि मुझे 129th ब्लॉक चाहिए, बट एक्चुअली आज पर अगर 1 से कैलकुलेट करेंगे 138th ब्लॉक की नहीं? अभी बोल पाओगे नॉर्मल कैलकुलेशन में दिस 138th ब्लॉक कौन सा सिलेंडर में होगा? आप अगर जनरली एनालाइज करोगे 1 से 48 कौन सा सिलेंडर में है? फर्स्ट सिलेंडर. वेरी नाइस, मतलब 0th सिलेंडर. सही बोला कि नहीं? देन 49 से कितना होगा? 90. 48 प्लस 48 96. कौन सा सिलेंडर में होगा? 1th सिलेंडर. देन 96 प्लस कितना होगा? 48 कितना आता है? 144. 144. वो कितना? सेकंड. 97 से 140. ये वाला सिलेंडर में होगा कि नहीं? हमारा 130 जो है यहां पर होगा. यस, तो हमारा सिलेंडर नंबर कितना मिल गया? सिलेंडर नंबर कितना मिल गया? सेकंड. एक आंसर आ गया. 2 नहीं, 2th सिलेंडर में मेरा है. और 2 मिनट में थोड़ा खत्म कर देते हैं, फिर नेक्स्ट को फॉर्मूला क्रिएट करेंगे. यस, अब बोलिए अगर हो गया, अभी कितना हो गया? दिस 130 है. 130 से 130 था हमारा रिक्वायरमेंट.
सो हमारा 48 दो सिलेंडर चला गया। सो कितना 96 चला गया। 96 जाने पर कितना बचा बोलिए तो दे ए 4 है, ए 12 9 34 इन सेकंड थर्ड सिलेंडर 34th सेक्टर इज 130। करेक्ट है कि नहीं? 48 चला गया क्योंकि ए पूरा का पूरा 48 था, ए पूरा का पूरा 48 था, तो 96 चला गया और कितना बचा 34। मतलब इस सिलेंडर में, इस वाला सिलेंडर में 34th वाला जो सेक्टर होगा वही होगा हमारा, कि नहीं? अभी बोलिए ए जो सिलेंडर है, ए जो सिलेंडर है, पहला सरफेस में कितना है 8, सेकंड में भी 8, थर्ड में भी 8। इससे बोलिए कौन सा सरफेस में मेरा 34 होगा? 8 8 8 8 8 इंटू 4 32 32। सो कौन सा वाला चला गया? इसका ऊपर वाला नीचे वाला चला गया 1, इसका ऊपर इसका नीचे 1 चला गया 3, इसका ऊपर वाला चला गया, इसका नीचे वाला में है। सो कौन सा सरफेस बोल दीजिए? अगर सरफेस शुरू करते हैं 0, देन A1, ए नीचे 2, इसका 3, इसका 4 में है कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? 4th में है। सो कौन सा वाला हेड में हमारा वही डाटा है? 4th वाला हेड में। समझ पाए कि नहीं? क्योंकि ए 4 है, 4 32 मतलब 0 1 2 3 चारों मिला के ए 32 हुआ। ये चारों मिला के आप देख लीजिए, ये चारों मिला के 32 हुआ। कौन सा 4? ये जो सिलेंडर का, ए सिलेंडर का नीचे वाला 1, इसका ऊपर वाला 1, इसका नीचे वाला 1 3 और इसका ऊपर वाला 1 4, 32 चला गया। 5th वाला में होगा। अगर 0 से हेड शुरू होता है 5th मतलब कौन सा है? 4 नंबर वाला कि नहीं? समझ में आ गया? अभी बोल दिए इस 4 नंबर वाला का मतलब 5th नंबर वाला का कौन सा सेक्टर में ये वाला है? 2। आंसर आ गया। Then what the controller has to be generated when the CPU gives a logical address as a 129, then the controller will be generated what? 242 2th सिलेंडर का 4th हेड का सेकंड सरफेस। सर इसको डिवाइड बाय 6 कर देते हैं। नहीं, अब बाद में सीखेंगे, लेकिन इतना आ गया कि नहीं? हम डिस्क का कंट्रोलर जो काम किया हमारा दिमाग अभी वही काम कर दिया। लेकिन एक चीज आप नहीं पूछे, सर वो सिलेंडर को क्यों पहले कंसीडर किया? सरफेस का कंसीडर करने से क्या फर्क पड़ता था? फर्स्ट सरफेस टोटल, सेकंड सरफेस टोटल, थर्ड सरफेस टोटल, ऐसे भी कर सकता था। हम अभी क्या कैलकुलेट किए? 48 प्लस 48 प्लस 48 फॉर प्रेसिडेंट। बट मैं बोलूंगा नो नो सर, ये एक ट्रैक कितना है? कितना ट्रैक से एक सरफेस में? 4। एक ट्रैक पे 8 सरफेस, 8 इंटू 4 कितना है? 32। ऐसे 6 ठो 32 है कि नहीं? मैं बोल सकता था कि फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस ऐसे कैलकुलेट करके भी बोल सकता था। वो क्यों ऐसे किया? सर्च टाइम घटेगा। सब पैरेलल सर्चिंग भी हो रहा है, एक साथ मूव कर रहा है। मतलब आप अगर देखोगे, ये वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखो सब एक साथ मूव। ये जो हेड है ना, ये जो हेड, खत्म तुरंत करता हूं 1 मिनट में। ये जो हेड है, देखो ये हेड ये आर्म के साथ फिक्स है। मतलब आर्म घूमेगा तब जाके हेड घूम रहा है। आर्म फिक्स होके हेड नहीं घूम पाएगा। आर्म अगर मूव कर रहा है तो हेड भी मूव कर रहा है। ठीक है ना? अभी बोलिए, अगर आर्म मूव कर रहा है, हेड मूव कर रहा है, इसका हेड अगर 4th ट्रैक पे है, ये हेड वही 4th ट्रैक पे होगा कि नहीं? बोल पा रहे हो कि नहीं? सिलेंडर में होगा। मतलब ये जो 6 हेड इज प्रेजेंट इन 4th ट्रैक सरफेस की नहीं? मीन्स इफ हेड कैन बी रन साइमल्टेनियसली 6 सरफेस में, 6 हेड विल बी फेच 6 ब्लॉक्स। अगर वो ना करके हम सरफेस लेते हैं, एक हेड किसको पॉइंट आउट कर रहा है?
एक ट्रैक को पॉइंट आउट कर रहा है। अगर मैं सरफेस को नंबरिंग करता, दूसरा ट्रैक कहां पर है, सेम ट्रैक का नेक्स्ट में है, तो जब मेरा हेड मूवमेंट करेगा तब जाके वो हो पाएगा, और सॉरी डिस्क मूवमेंट करेगा तब जाके हो पाएगा, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ओके, इसीलिए वो क्या किए, सिलेंडर वाइज लिए हैं, सो दैट एट अ टाइम if my data will be stored in 1 2 3 4 5 6 8 9 10, then एक ही सिलेंडर में है कि नहीं। So with one arm movement my all 10 sectors has to be there, no need to go anything. So that's the reason they have taken a cylinder wise division rather than a surface wise division. ठीक है सर, इसे पैरेलल सर्चिंग में होता है क्या? हाँ हाँ, सर इसे पैरेलल सर्चिंग, पैरेलल भी रीड करता है, क्यों नहीं, ओके पॉसिबिलिटी आता है, बट पैरेलल भी नहीं होगा फिर भी देखिए आर्म मूवमेंट नहीं होगा तो आपका हाँ। टाइमिंग भी बच जाता है। हाँ, आर्म इज ए फिजिकल एंटिटी, मूवमेंट इज ऑलवेज टाइम कंज्यूमिंग, ऐसा ना। यस ओके, बंद करता हूँ, थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया।